then back cross and test cross. Or these two cross are also called as confirmation test of Mendel's law. मेंडल सबू एक्सपेरिमेंट सबू कला परे फोर पोस्टुलेट्स तांकर एडवोकेट कला परे सी कन्फर्म करिया पे चाहिए जे एई गुडा जदि बैक क्रॉस करा जिवो ताहले कोन रिजल्ट बाहरुची से सेम रिजल्ट बाहरुची ना अलगा रिजल्ट बाहरुची. सो फास्ट कोन हुए पेरेंटल प्लांट आर hybridized with each other, then we get F1 generation. The plants which then the plants which get from F1 generation crossed with each other, then we get F2 generation plants. But in back cross, he crushed the F1 generation plants with the P1 generation plant. He crushed the F1 generation plants with the P1 generation plant, and this cross is called as back cross. एथिपाई से कौन नहीं थिले रेड प्लांट एंड व्हाइट प्लांट. कैपिटल सी रेड फ्लावर प्लांट, स्मॉल सी व्हाइट फ्लावर प्लांट. तापरे से कौन कले एथिरो जो स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी एटा होची तमर कोन P1 जनरेशन से याको क्रॉस करी कोन पाइथिले कैपिटल सी स्मॉल सी. इन F1 जनरेशन से अगेन F1 जनरेशन प्लांट को P1 जनरेशन प्लांट सहित हाइब्रिडाइज कले. से फास्ट F1 जनरेशन प्लांट को गोटे हेटेरोजाइगस प्लांट सहित ना फास्ट कंप्लीट डोमिनेंट प्लांट सहित हाइब्रिडाइज करले. मान जो थे दीटा को कैपिटल सी अच्छी एठू से कैपिटल सी स्मॉल सी पाइले एठू कैपिटल सी तो जिते बड़े देन कैपिटल सी रेड प्लांट है रेड फ्लावर प्लांट
स्मॉल सी कैपिटल सी जेहेतु गोटे कैपिटल सी रही ये भी रेड प्लांट है एठी कैपिटल सी सहित कैपिटल सी को हाइब्रिडाइज कले ये भी रेड प्लांट ये स्मॉल सी कैपिटल सी ये भी रेड प्लांट है रेड फ्लावर प्लांट When Mendel hybridized the F1 generation heterozygous plant with the complete dominant homozygous plant, then he got 100% red flower plant or 100% dominant plant. जेहेतु तुम ये कैपिटल सी आ स्मॉल सी होची एटा से पाइथिले F1 जेनेरेशन रु आ कैपिटल सी टा होची P1 जेनेरेशन रो होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट जो थे दीटा जाक कैपिटल सी अच्छी तेणु से कैपिटल सी रिप्रेजेंट करुच्ची रेड फ्लावर प्लांट आ स्मॉल सी तुम रिप्रेजेंट करुच्ची व्हाइट फ्लावर प्लांट तो कैपिटल सी स्मॉल सी जो से पाई गैमेट्स कैपिटल सी स्मॉल सी ये कैपिटल सी जो से गैमेट दीटा एलिस गैमेट्स पाइले कैपिटल सी तापर से एवरी प्रोबेबल कंडीशन ही हाइब्रिडाइज्ड विथ ईच अदर एटा होची तमर कोन कैपिटल सी होची डोमिनेंट कैरेक्टर आ स्मॉल सी होची रिसेसिव कैरेक्टर तो when he hybridized with capital C he got the red flower plant both the dominant characters are present when he hybridized the capital small c with capital C then he got the heterozygous red flower plant one capital C is present one small c is present though the capital C is present which is the dominant character red is the dominant character then the plant is red flower plant when he hybridized the capital C with capital C then he got the plant containing the gene capital C both are the dominant character and the plant is pure red plant then again he hybridized the capital C small c with capital C then he got the plant containing the gene one dominant character one recessive character though one dominant character is present then plant is red phenotypically he got 100% dominant plant again he backcrossed से कौन कले से F1 जेनेरेशन रो प्लांट नेले आ दीटा को डोमिनेंट जीन जो प्लांट रे प्रेजेंट थिला सेथिरे हाइब्रिडाइज करले किंतु से आउ गोटे कन्फर्म में आउ गोटे टेस्ट करले जो थिरे से कैपिटल C स्मॉल c जोटा तमरे F1 जेनेरेशन प्लांट आउ स्मॉल c जोटा होची तमरो प्योर होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर जो थे अच्छी तेणु से एगेन ताकू हाइब्रिडाइज कले एथि से कैपिटल C स्मॉल c नेले एथि स्मॉल c देन से हाइब्रिडाइज्ड with capital C to small c one dominant allele is present for this the plant is red color flower plant small c both the recessive genes are present for this the plant is white color flower plant then small c now then again capital C hybridized with small c capital C small c then red color flower plant because one capital C is present which is the dominant character for this the plant is red flower plant then again he hybridized the small c with the small c then he got white color flower plant 50%
red flower plant and 50% white flower plant. In this crush, first he crushed the F1 generation plant with the homozygous dominant plant and he got 100% red plant. When he hybridized the F1 generation plant with the homozygous dwarf or recessive character plant, he got 50% dominant plant and 50% recessive plant. Test cross. When Mendel hybridized the F1 generation plant with only the recessive homozygous P1 generation plant then it is called H. It is called as test cross. तो कौन कले से कलर प्लांट को जदि आम देखा से कौन सी थरे F1 जनरेशन प्लांट को से क्रॉस करते होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर सहित आ थरे रिसेसिव सहित किंतु एठी से खाली रिसेसिव कैरेक्टर सहित ही कले कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी then hybridized which is red, then small c which is white. I have just told this small, then capital C small c which is red, and then small c which is white color. He got the 50% red flower plant, then 50% white flower plant. This is called as test cross. Today we have discussed about the four postulates of Mendel's postulate 1, 2, 3, 4. First postulate is law of pair characters, then second postulate is law of dominance, third is law of purity, and fourth is law of independent assessment. In first postulate he states that both the genes or alleles are present in pair form, not in single form. And in second postulate he advocated that in F1 generation only the when we crush the homozygous P1 generation plants or heterozygous plants in F1 generation we get only the dominant character plant. Then law of purity, the third law states that if we hybridize the homozygous or heterozygous alleles,
both all the genes are separated randomly and they get mixed, hybridized with each other, but they maintain their purity firm. They do not blend their character. And at the last, in the law of independent assessment, he took dihybrid two or more characters and hybridized with each other, and in that postulate also he told all the genes or all the alleles separated randomly and they hybridized with each other.